Hello everyone. Am I audible? Please write in the comment section. So today's workshop is completely based on interview preparation and competitive programming, right? So again, as in the previous workshop, also I discussed lots of things about interview preparation, competitive programming. कि कहाँ पे difference आ जाता है and where are those similar, right? So in today's workshop also we'll discuss about कि does competitive programming help us achieve something in interview preparation wise, right? मतलब कि अगर competitive programming की हेल्प मिल रही है तो कितनी मिल रही है और क्या उसकी हेल्प चाहिए, कितनी कितनी चाहिए, कितनी ज़रूरत है एंड ऑल दैट, राइट? सो if I'm audible, please write on the comment section, guys. So I'm continuously looking at the section. uh, cool. Okay, so let's discuss about it, and if you have any doubts, comments mein likho. I'm continuously looking at it and I'll take all the doubts, okay, one by one, right? Okay, now I can see the comments. Great. Okay, so let's start with कि कि अगर सीपी करें तो कितनी करें ताकि इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए, राइट? कि हाउ मच कॉम्पिटिटिव इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अ गुड इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट? Okay, so let's start. See guys, CP में there are lots of things, ठीक है? It's not just about data structures and algorithms knowledge you are getting from CP. There is a time management skill, of course a competitive programming skill you are getting from a competitive skill, right, that you are getting from CP. And okay, I've started to get the questions here. Good. So I'll take those questions one by one, but before that, let's get over with this, right? कि देखो, the important thing is कि for companies like Google and Google में क्या होता है, if you must have heard about Kickstart, right? So Kickstart is uh, Google's coding competition like Google Hash Code, Google Code Gem, right? So Kickstart में क्या होता है, generally there are 4 questions, right? There are 6 rounds and एक राउंड तो शायद आने वाला है, अभी 21 मार्च से शुरू हो रहा है, right? This year's Kickstart. Okay, so Kickstart में what happens is yeah, you have 4 questions and you have to solve those 4 questions like a competitive programming contest, a normal contest, right? जिसमें worldwide participants are there. So what happens in those contests, guys? Sorry, you get specific ranks, right? So you get specific ranks in those contests. Let's say you get a double digit rank, let's say you get a under 50 rank, ठीक है? तुमने बहुत competitive programming करी, you are very good at DSL Go, and in competitive programming you get a under 50 rank, right? Then what happens is sometimes even recruiters, they contact themselves. तुम्हारे पास खुद contact आता है उनका and they ask you for participating because in Kickstart you must have given your email addresses and all, right? So they send you the emails and they ask you to give interviews if you want to join Google or not, right? So CP यहाँ पे help करती है to get shortlisted for interviews, right? So I'm not saying कि for interviews CP is must. I'm saying to get shortlisted for a good tech company, you should have a good competitive profile, right? And of course there are other benefits of CP, discuss करते हैं एक करके. So this was one example of Google Kickstart that I gave recently. Now guys, let's talk about referrals, है ना? There is this question, but for shortlisting even after getting referral, CP is required. Okay, so this is a good question. See, CP is not required at all if you don't want to do it, right? But if you wish to do it, you do it for yourself. It's ऐसा समझ लो, it's an extra cover for the DSL Go, right? It's not required, but it's an extra cover which will like help you move further in the rounds, right? आज मान लो let's say तुमने DSL को कर ली, let's say after 5 years you are trying to switch over some companies, right?
तो उसमें भी they will again ask you some data structures and algorithm questions, right? So if you have done enough CP, if you are in touch with CP, if you were into it really, तो तुम्हें बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगी, right? Because you have already done CP so much that you are well aware about the time management skills in that, right? Or इतना DSL को कर लिया, you can optimize it to the best, right? So this is one point of that. Okay, कहाँ गया? Yeah. So for shortlisting, even after getting referral, CP is not required, right? But for cracking interviews, for easily cracking interviews, CP is required, right? जरूरी नहीं है. It's not mandatory thing, but it's a, you can say, a little requirement, because in interviews also we have some time pressure, right? To tackle that time pressure, ki within time we have to think for a optimal solution, you can go for competitive programming, right? So if you get a referral, if you are easily getting a referral, देखो referral भी कैसे मिलता है? Most of the time what happens is, as a recruiter contacts you through a good rank in the coding competitions, or someone gives you a referral because of your ranks in good coding competitions, right? Generally referrals भी तो इसी way में मिलता है ना, कि you have some good coding competition ranks, right? Competitive programming ranks, you are like a master or candidate master on Codeforces, then the other guys who is referring you, he thinks कि yes, ये बंदा सही है, he might be able to crack it because he had some good ranks, right? So वो ranks कहाँ से आ रही हैं? It's because of competitive programming only, right? So you are getting referrals through competitive programming. You're getting my point? So you are getting shortlisted for the interview because of this, right? I'm not saying it is for all the 100% cases, but maximum cases, like 70% cases, this is true, right? You can easily get a referral if you have good ranks. You just approach the guy, you send your resume to him, you tell about your ranks, right? And then the other guy thinks ki yes, he might be able to do it because he's already into it. Cool. So CP is not must, but if you do it, it's not bad. Cool. But always remember, interview preparation and competitive programming are separate things. जरूरी नहीं है किसी ने let's say he has done both code chef and code forces a lot for years, and let's take a second guy who has not done this at any point of time in life, right? It's not mandatory कि यार for the second guy he won't be able to crack good companies. ऐसा नहीं है, right? CP is for your own health, right? To pass your own time, to manage your competitive skills. Okay, it's not a mandatory part of interview preparation. Okay, but as I already said, it's an extra cover. ठीक है, मतलब it's like कि let's talk about bodybuilding, है ना? कि okay, you are trying to make a good body, that's good. And what is CP? CP is a extra weight that you are trying to push so that in come time you are able to gain more. Getting the point? रोज नॉर्मल कर रहे हो, इट्स गुड, धीरे धीरे हो रहा है, बट देयर इज सम वेट दैट यू आर ट्राइंग टू पुल एक्स्ट्रा एवरी डे, है ना? दैट विल हेल्प यू गेन गुड फिजिक मच फास्टर. सो दैट इज सीपी, राइट? इट इज हेल्पिंग यू स्पीड अप थिंग्स, एंड वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, राइट? सो इट्स बेसिकली इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू समथिंग गुड. CP, I would say that. Okay, what was the next question? I know basics of DSL go. How much time needed to become 4-star and good on short contest? Right. It's a good question. Generally, what happens is everyone starts from long contest, है ना? So in long contest, we don't have time pressure. हमें बस implementation wise देखना होता है. Right. So for beginners, long contest are really good, है ना? For a beginner purpose, because you have enough time to solve the question. You have enough time to think, right? But in short contest, guys, what happens is you must have seen कोई एक दो मिनट में submissions कर रहे हैं. That is, they are even reading the question within 1 minute, understanding the question, solving the problem, coding it out, and full accuracy problem, right? They're solving it within 1 minute, 2 minute, and 3 minutes also, right? So for CP, you need to be accurate, you need to be fast, you need to be knowledgeable, you need to have competitive skills, right? So if you want to become like a 4-star, as he has asked, so I would say that 4-star is not a big deal, I guess, these days, because long वगैरह देके easily 4-star तो बन ही जा रहे हैं, right? A big deal is about, like, I would say that it's a 6-star is a big deal, right? And 7-star is of course the best,
right? तो 4 star के लिए hardly it should take 6 months, right? Hardly, because I've seen that lots of people, they are like giving long contest, and through long only they are becoming 4 star very fast. Okay, so 6 months are more than enough for becoming 6 star. But for short contest, if you want to be good at short contest, then you need to have a lot of knowledge about algorithms and all, right? So there are a lot of things जो short contest में help करती हैं. There's your let's say जैसे let me show you mine. This is a text editor, right? So इसमें as you can see that there are a lot of things in which I can wait, let me share my screen. Okay, I hope the screen is visible, guys. So जैसे ये मेरा text editor है, ठीक है? So in this you can see that I have made a snippet. What is a snippet? Ki whenever I'm typing some particular keywords, so I have a full snippet associated with that keyword. So I am typing new, pressing tab or enter, I get this whole code, right? So what basically happens, guys, if I'm taking a particular input, let's say I want an array of size 2. So what I do is I take n, input n, and input the array, right? See, so there are two things. Either you write the whole code, right? Either you are writing the whole code from beginning to end, right? Or you are already preparing a good snippet and increasing the time, saving the time to write the whole code, right? So for short contests, there are lots of things, really. There are like small things that will help you a lot to in achieving a good rank in the short contest, because they all are optimizing a very small part. Let's say 30 seconds भी optimize हो रहे हैं, तो that are more, बहुत ज़्यादा है 30 seconds for short contest, right? कैसे? Let's say you submitted the first question 30 seconds earlier, तो second question भी 30 seconds earlier कर रहे हो, so basically they are accumulating, right? For third question basically you have 1 minute more, क्योंकि तुमने first और second question 30 minutes पहले submit किया है because of some snippet optimizations. जैसे segmentary है, I want to implement a segmentary, I have already made a snippet of segmentary, right? और वो मैंने let me show you. Yeah, so वो मैंने snippet copy कर रखी है and I just paste it down and I run it, right? So there are lots of small tricks and optimizations. There's a good blog, I don't know where I have read it, but उसमें there were tips, उसमें थी tricks थी उसमें थोड़ी about competitive programming. आशीष गुप्ता ने लिखा था that, I guess, right? So you must see that. So for short contests, it's not only your speed, it's about a lot of various other factors also. Okay, कि तुम there are lots of friends of mine जो क्या करते हैं, they're not able to understand the question in one go, right? So थोड़ा concentration कहीं break हो जाता है and then they have to read the question again. So short contest में ये भी matter करता है, right? कि what time are you taking to read the whole English structure of the question of the problem and understanding the statement, right? It's not only about your thinking capabilities, it's also about reading capabilities then, right? So बहुत सारी चीजें हैं. We'll get back to that later, but I hope you have understood कि short contest में time लगेगा, right? Even 1 year लग सकता है to become good at short contest. Like kickstart अगर अच्छा करना है तो it's a 3 hour contest only, so you need to be really good at short contest for that, ठीक है? And एक बात है कि if you get like a double digit rank or a single digit rank in kickstart, तो most 90% चांस है कि recruiter will contact themselves, right? तुम्हें खुद से contact आ जाएगा उसके पास. Otherwise if you ask anyone for a referral, they will refer you. It's a good rank, right? So I would always suggest कि kickstart, codejam, hashcode, Facebook का होता है hacker cup, just aim them, right? Achieve good ranks. Of course getting to the top will take a lot of time. It completely depends on your level, but we can aim like under 100 rank within 2 years. It's not a big job. Okay, so Adil, your question is that you have been doing Codeforces for 6 months and you are not improving, what should you do? Yeah, so for you only, I have like, this workshop is mostly based on this question only, कि if the people are not improving,
right? So there are lots of things that you need to do. Okay, let me share the screen once. Okay, so I hope the screen is visible, guys. So there is this website that I went through earlier, and its name is this surya1231.github.io/codeforces contest. Right, there is someone who has made this. I don't know him personally, but I really like this website, and I tell lots of my friends and students to go through this website to practice. Right. So if you are a beginner to this, if you're a beginner to code forces, then what you do is जो ये डिप थ्री कॉन्टेस्ट होते हैं, देर आर डिप थ्री कॉन्टेस्ट एंड मोस्ट ऑफ देम आर फॉर बिगनर्स, राइट? मतलब दे हैव सम गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस. गुड से मतलब ये है कि इफ यू आर अ बिगनर देन यू विल बी एबल टू सॉल्व फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस योरसेल्फ, नॉट अ बिग इशू. बट जो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन होगा दैट विल बी टारगेटिंग अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम, एंड उस एल्गोरिदम का गुड लेवल क्वेश्चन होगा फॉर अ बिगनर, राइट? सो बेसिकली डिप थ्री क्वेश्चंस विल मेक यू एन इंथुजियास्ट फॉर एल्गोरिथम्स. मतलब बेसिकली ऐसा है कि पहले तीन क्वेश्चन हो जाएंगे तो यू वोंट बी फीलिंग डिप्रेस्ड और यू वोंट बी हैविंग नेगेटिव थॉट्स. एंड जो लास्ट तीन क्वेश्चंस हैं दे आर सो गुड, दे गिव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम कि तुम you will be eagerly waiting to solve the next questions, right? So just go to this website and try div3 contest. And how would you try them? Just click on the link, and what you can see is here whenever you enter your username here, you can enter your username, and by your username he will fetch कि तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए, right? So by that you can maintain the track कि this question has been done from this contest and this has not been done from this contest, right? Like this, fetch your info. Let me write my name. Okay, so see, these blue ones are that I have done. I have completed these questions, and these red ones are that I have not done. Right. So here I can maintain a track of questions which I have done and which I have not. So recently I have just lost touch of it because I have been busy with internships and all. But earlier I used to do all the contests. I don't leave a single contest. Right. So in this way you can for this is for beginners, right? And if you are like let's say 6 months or 1 year into this, then what you do is you go to this tab, educational contest, right? And you start solving educational contest problems. See, these educational contests are really good. And if you are like 6 months or 1 year into this competitive programming, then these educational rounds will really help you a lot. These educational rounds target particular algorithms with medium to hard level difficulty, right? So इसमें काफ़ी कुछ सीखने का है guys. And from this website you can like track things, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन करें कितने नहीं करें और कहाँ से करने हैं. एंड यू कैन लाइक गो स्टेप बाय स्टेप ऑल्सो. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अप डाउन एंड स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन ईच, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. एंड इससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. आई लाइक शेयर दिस लिंक इन द कमेंट सेक्शन when this ends. And yeah, one more thing guys. So if you want to practice really well, then what you do is instead of just solving questions, है ना, बस खाली बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने से बेटर है, what you do is you try to give virtual contests. So Codeforces has this special feature of giving virtual contests, right? So in virtual contests what you can do is that the contest, when you start a virtual contest, it will feel like you are actually into a contest. Let's say after 10 minutes in the original contest 100 submissions हुए थे, right? So in virtual contest also you will get a rank list according to that, right? Like a runtime live rank list जैसे आती है, it will come according to that. So there is a very good option in Codeforces of giving virtual contest. So what we used to do was, like, me my friends, we used to give virtual contest. And आफ्टर गिविंग वर्चुअल कॉन्टेस्ट, जैसे हमने कोई वर्चुअल दिया, वर्चुअल इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस बिकॉज you need to solve a problem within time limit, right? See, why are why are some people really at the top? Because वो कम टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, right? See, even you can solve a question within 1 year. Let's say एक बहुत टफ क्वेश्चन है
कोई भी कर लेगा उसे 6 months, 1 year, 10 years आराम से, राइट? बट इट इज एक्चुअली टाइम टाइम दैट इज मेंटेनिंग एवरीथिंग. टाइम ही तो सब कुछ है, राइट? इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन हाफ एन आवर, दैट इज वॉट मैटर्स, राइट? क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, ही कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सॉल्व हो ही जाएगा, राइट? बट it is time for which we are trying to practice. We are trying to practice to reduce time in the end, right? So time के लिए हम क्या करते हैं? We give virtual contest. So virtual contest से क्या होता है? We are actually giving a contest which has happened earlier in the past, but we are feeling like कि यार वो अभी हो रहा है, and we are trying to compete, we are trying to get the rank list and solve the problems, right? So give virtual contest, and the most important thing is do upsolve. Upsolve क्या होता है? Let's say you are giving a virtual contest, तुम you are able to solve 4 problems out of 5. Let's say तुमने div 3 virtual contest दिया just after this webinar ends, and you were able to solve in within 2 hours, you were able to solve 4 problems, let's say, right? And you were stuck on the fifth problem. Now guys, for the fifth problem, what we have is we need to solve that fifth problem after the virtual contest ends. That is called upsolving, कि हम एक स्टेप ऊपर अपसॉल्व कर रहे हैं, 2 स्टेप ऊपर अपसॉल्व कर रहे हैं. Upsolving takes time because वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ था in the contest. That means only one thing, कि you were lacking somewhere in the data structures or algorithms part. जो चीज it was out of the contest which we know, हमारी नॉलेज के बाहर थी अभी, राइट? सो उसे हमारी नॉलेज के अंदर लाना है, so that whenever next time I I face same type of question, तो मेरे से छूटे ना, right? That's what practice means, right? So this is upsolving, guys. Upsolving is very very necessary for competitive programming. मतलब upsolving तो करनी है. You must have seen, if you are already doing it, तुमने देखा होगा कि generally after contest लोग एक या दो क्वेश्चन upsolve करते हैं. Why they do it? Because उनसे contest में नहीं हुआ, that means they were lagging somewhere behind it, right? And if you want upsolve, guys, तो सेम तुम उस जगह स्टेगनेंट हो जाओगे, राइट? एज दिस क्वेश्चन वाज कि ही इज डूइंग दिस फॉर 6 months बट स्टिल नॉट इम्प्रूविंग. सो आई गेस दिस इज द ओनली आंसर, कि यू आर नॉट ट्राइंग टू अपसॉल्व. अगर लेट्स से तुम 2 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग द थर्ड क्वेश्चन इवन आफ्टर कॉन्टेस्ट, तो तुम लाइक फॉर infinity you will be only able to solve 2 questions because you are not trying the third question. वैसा या उसके सिमिलर जब क्वेश्चन रिपीट होगा, then also you won't be able to do it, right? Because you are not upsolving. So you need to upsolve to get better day by day, right? So I hope you have heard about that meme है या जो भी समझो, fact है. It is that 1.01 to the power 365 is काफी ज़्यादा, right? And 0.99 to the power 365 is really less. So a small effort every day will give you a big benefit after a particular time. Okay, right? So if you are stagnant at some place, upsolve करो. Do 2 questions upsolving. It will take a lot of time. अगले दिन 2-3 घंटे लग सकते हैं, right? But please upsolve. That will only help you. Okay, so the next question is minimum time to give to CP, right? So Ankit, if you are doing CP, then बहुत सारे तरीके हैं. Some people are really into it, कि पूरा दिन ही दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, कहीं भी कॉन्टेस्ट हो रहा है, लेट्स से हैकरथ, हैकरैंक, एडकोडर, कोडफोर्सेस, कोडशेफ, कहीं भी कॉन्टेस्ट हो रहा है, दे आर गिविंग इट, राइट? देयर आर सम दीस टाइप्स ऑफ पीपल आल्सो, एंड देयर आर सम अदर पीपल आल्सो. व्हाट दे डू इज कि जब कॉन्टेस्ट हो रहा है, दे गिव द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के बाद दे अपसॉल्व एंड दे लीव इट. मतलब वो एक्सटर्नल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. लेट्स से दे स्टिक ओनली टू कोड फोर्सेस, दे आर गिविंग कॉन्टेस्ट विच आर हैपनिंग ऑन कोड फोर्सेस एंड दे आर अपसॉल्विंग बिकॉज दे हैव अदर जॉब्स टू, जॉब के साथ साथ करें, right? And then there are other types of people too, right? What they do is they just give contest, they don't absolve. So हर जगह टाइम डिपेंडेंट है, राइट? द मोर टाइम यू गिव टू समथिंग, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, राइट? द मोर मतलब उतना इंडल्ज रहोगे तुम सीपी में, एंड उतनी जल्दी ग्रो करोगे, राइट? सो इफ यू गिव मोर टाइम, यू विल बी गेनिंग रियली फास्ट. Okay, so minimum time is according to your needs. मतलब basically जैसे मान लो if you are doing a job, let's say you are doing a job
है ना. एंड इफ यू वांट टू ट्राई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सो यू कैन जस्ट गिव कॉन्टेस्ट, बस कॉन्टेस्ट दो एंड अगले दिन अब सॉल्व कर लो वेन एवर यू गेट टाइम बिटवीन योर जॉब, है ना. दो क्वेश्चन अब सॉल्व करो, एंड दिस स्मॉल एफर्ट एवरी डे लाइक फॉर 1 year लेट्स से, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, राइट. एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज देखो मैं तो कॉलेज में ही हूँ, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ बीटेक इन DTU, ठीक है. बट आई हैव मेंटर्ड स्टूडेंट्स हु वर इन जॉब, राइट. लास्ट ईयर आई टुक मैनी बैचेस, उसमें स्टूडेंट्स से दे वर already doing jobs, and now they have even upgraded too. So I would like suggest you some एक webinar रख लेंगे with those students, right, who are doing job and doing CP together to upgrade of course. तो मैं बस ये कहूँगा फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, अ लिटिल एफर्ट एवरी डे कैन गिव यू अ लॉट, राइट. भैया रैंडम मैथ होता है और हर क्वेश्चन में, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, राइट. सो बहुत सिंपल है इसका लॉजिक, कि इफ यू गेट रैंडम मैथमेटिक्स, है ना. तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं लाइक BCD वाले, उसमें इतनी हार्ड मैथमेटिक्स नहीं होती, राइट. सो दो जो मैथमेटिक्स आती है दैट कैन इजीली बी सॉल्व बाय 11th-12th में आराम से, जो भी होती है ना हमारी बेसिक्स मैथ्स, उसके क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट. और जो नेक्स्ट लेवल मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट. वी डोंट इवन ट्राई दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट. सो जो इजी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ट्राई करो. थोड़ी मैथमेटिक्स क्लियरिटी तो होनी चाहिए बिकॉज कोडिंग फील्ड ही पूरी मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है, राइट. Okay, where to do CP? So lots of websites hai. You can try any website. Every website is good, right? You can try courses for CP. एक coding blocks का ही course है. It's made by me and Pratik Bhaiya. Pratik Bhaiya is in Google, and वो कोर्स भी अच्छा है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह तुम्हें मिल जाएगी. यू विल गेट अ स्टार्ट फॉर CP. एंड अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, लाइक यू हैव टू गिव डेली कॉन्टेस्ट एंड ऑल, देन देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स. मतलब यू मस्ट हैव सीन कोड फोर्सेस है, कोडशिफ है, एटकोडर है, हैकर रहता है, हैकर रैंक है, राइट. यू कैन ट्राई एनी वेयर, ऑल ऑफ देम आर गुड, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई एवरीवेयर, राइट. जैसे कोई भी, लेट्स से यू वांट टू स्टडी ग्राफ्स, तो यू ओपन सम ब्लॉग ऑन कोड फोर्सेस ऑन ग्राफ्स, रेड इट, हैकर रैंक से ग्राफ पढ़ लिया, हैकर से पढ़ लिया, थोड़े क्वेश्चंस हर जगह से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लिए, राइट. बट आई विल ऑलवेज ऑलवेज सजेस्ट यू वन थिंग, कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इजी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द वेबसाइट्स, किसी एक वेबसाइट को पकड़ो जिससे तुम इजी मीडियम हार्ड तीनों क्वेश्चन कर लो. दैट विल ओनली हेल्प यू, बिकॉज इफ यू आर ओनली डूइंग इजी क्वेश्चंस, इट विल लाइक बूस्ट योर मोरल ऑफ कोर्स, बिकॉज वो क्वेश्चंस होते रहेंगे, बट इट वोंट एक्चुअली हेल्प यू इन फ्यूचर, राइट. इन लॉन्गर टाइम इट वोंट हेल्प यू इफ यू डोंट ट्राई हार्ड प्रॉब्लम्स. तो हमेशा इजी प्रॉब्लम्स ही करते रह जाओगे, एंड इजी प्रॉब्लम्स आर लाइक मोस्टली लाइक A and B ओनली, राइट. सो पिक वन साइड, उससे सारा करो इंस्टेड ऑफ डूइंग इजी फ्रॉम ऑल. ओके. अर्ध हिंदू, ओके, आई गेस लॉन्च पैड बैच का ही था ये, इफ आई रिमेम्बर. हम भी एक साल से, ओके. एंड ही इज अ स्पेशलिस्ट, ओके. सो ही स्टक ऑन स्पेशलिस्ट. सो मैं भी काफ़ी टाइम आई गेस एक्सपर्ट पे स्टक था. सो देयर वाज दिस ओनली वन थिंग, कि उस टाइम मैं अपसॉल्व नहीं करता था, राइट. बट व्हेन लेटर आई स्टार्टेड अपसॉल्विंग, आफ्टर कॉन्टेस्ट आई ट्राइड अपसॉल्विंग, तो थोड़ी इंक्रीज होने लगी थी रेटिंग, राइट. बट इट डजंट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन अपसॉल्व, राइट. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर IQ लेवल, राइट, कि कितनी जल्दी ग्रेस्प कर रहे हो. मे बी मुझे 2-3 साल लग जाते वो चीज़ ग्रेस्प करने में, राइट. और मैं साथ में पढ़ाता भी था कोडिंग ब्लॉक्स में, तो इतना टाइम नहीं मिलता था मुझे टू प्रैक्टिस. बट still, right, you need to absolve if you want to go above. If you want your graph to be, slope of your graph to be positive, so you need to absolve, right. And थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लेने के लिए क्या करें, राइट. सो इंटर्नशिप में जब कंपनीज आती हैं, दे डोंट थिंक टू मच, दे डोंट आस्क फॉर हैवी डेवलपमेंट एंड ऑल. दे टेक नॉर्मल कोडिंग राउंड्स एंड दे आस्क TSL को, मोस्टली 90%, राइट, जो नॉर्मल पैकेज देती हैं. सो even Google, though, for FT also they only take DSL go, right. We all know about the Google's hiring process. Only DSL go पूछती, even for FT, no development and all, right. So DSL go is the best thing. DSL को कहीं से भी प्रैक्टिस करो. इट्स नॉट नीडेड कि CP में ही जाओ. DSL को तुम लीड कोड से भी कर सकते हो.
I have already discussed this in the previous webinar also, right? कि डीएसएल को करनी है तो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, प्रीवियस वेबिनार में लॉट ऑफ डिस्कशन हुआ है, यू कैन सी दैट, राइट? आई गेस 7 days पहले ही हुआ था वेबिनार, और 4-5 days पहले. Cool. Does profile on Codeship really worth it after so much cheating long challenge? I think we should do code forces only. देखो, यस, इट्स अबाउट लॉन्ग, इफ इट्स अबाउट लॉन्ग चैलेंजेस जो 10 दिन के होते हैं, तो मतलब 10 दिन तक कोई वेट नहीं कर पाता, राइट? सो जनरली इसलिए वी कैन से कि काफ़ी चीटिंग हो जाती है. बट शॉर्ट कॉन्टेस्ट में क्या होता है ना, आई विल टेल यू द बेनिफिट. शॉर्ट कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि दोज कोडर्स हु आर एबल टू डू दोज टफ क्वेश्चंस ऑन टाइम, है ना, दे डोंट चीट, राइट? जनरली वो किसी को बताते नहीं है, बिकॉज शॉर्ट कॉन्टेस्ट में अगर तुम किसी को बताने लग गए, देन इट्स लाइक यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम, बिकॉज बहुत कम टाइम है, 2 hours का कॉन्टेस्ट होता है. अब तुम उसमें बताने बैठ जाओगे, यू वुड आस्क देम टू चेंज योर कोड एंड ऑल, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, प्लेगरिज्म ज़्यादा आएगी, बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास, राइट? इन लॉन्ग चैलेंजेस वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? दे पीपल अंडरस्टैंड कोड्स, दे I know a lot of things what are going on these long challenges. Telegram वगैरह पे I've seen a lot of things, right? तो चीटिंग वीटिंग होती है, बट इग्नोर दैट, इट डजेंट मैटर टू यू इन द एंड, है ना? व्हाट मैटर्स टू यू इज कि तुमने अपने लिए कितना सीखा. कोई चीटिंग कर रहे हो उसे करने दो, राइट? You have made your profile, you try to learn as much as you can from that profile. तुम अपने लिए करो, right? Why are you worried about others? Let them do it. It doesn't matter, right? अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि तुमने कितना गेन करा, और बाद में तुम्हें जहाँ जाना था तुम वहाँ जा पाए या नहीं जा पाए, राइट? तो शॉर्ट दो, लॉन्ग दो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. बट प्रोफाइल एवरीवेयर, कॉन्टेस्ट एवरीवेयर इज वर्थ इट, राइट? बाकी जो कर रहे हैं करने दो, इट शुड नॉट मैटर, आई गेस. CP takes a long time doing CP from 8 months and a specialist on CF. Give me some tips to become. Okay, I have told this. अब सॉल्व करो, जितना आप सॉल्व कर सकते हो, जितने वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हो, वर्चुअल कॉन्टेस्ट देते रहो, और उन कॉन्टेस्ट में ही आप सॉल्व करते रहो. लाइक यू जस्ट नीड टू गिव टाइम टू CP. मतलब कोई भी 1-2 साल में नहीं बन जाता. वैसे तो CP की जर्नी बहुत लंबी है, तुमने देखा होगा. देयर आर पीपल डूइंग फ्रॉम लाइक 10-15 years एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग इट, राइट? एंड एक प्रोफाइल मैंने देखी थी, सम RUBAN नाम से है, ऑन कोड फोर्सेस. आई सी दैट प्रोफाइल एंड आई वाज लाइक कि वो 10 साल से ही इज बिटवीन स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट ओनली, बट ही इज स्टिल डूइंग इट. ही हैज डन लेफ्ट अ कॉन्टेस्ट, राइट? सो सबका अपना डेडिकेशन लेवल है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, राइट? सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि उतना ही करो जितना ज़रूरत है, राइट? इफ़ यू आर, मतलब बहुत टाइम हो गया एंड यू आर जस्ट फेड अप कि नहीं हो रहा, तो क्यों करना है, राइट? क्यों करना है? मतलब वी डोंट हैव दैट मच टाइम, राइट? हमें DSL को करना है, वी हैव टू गो, वी हैव टू क्रैक कंपनीज, और इट्स नॉट ओनली कि CP सब कुछ है. देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ, राइट? जैसे यू कैन गो फॉर MS, यू कैन ट्राई डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सम लीड कोड. क्योंकि इन द एंड हम CP क्यों कर रहे हैं? मतलब मोस्ट ऑफ द रीजंस तो यही होते हैं, टू टैकल सम गुड इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, राइट? कि इंटरव्यू में जल्दी से हो जाएगा, इंटरव्यू के राउंड जल्दी से निकल जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए जो राउंड्स होते हैं वो जल्दी से निकल जाएंगे, राइट? दैट्स व्हाई वी आर डूइंग CP मोस्टली, राइट? तो इट शुड नॉट मैटर कि अगर रैंक वैंक नहीं बढ़ी है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है, राइट? इवन स्मार्ट पीपल जो है ना, बहुत स्मार्ट पीपल, उनको भी लाइक 2-3 साल लग जा रहे हैं टू गेट अ गुड रैंक. तो मैं तो आई वुड जस्ट से दिस ओनली कि इफ बहुत टाइम से अगर लाइक 1 साल प्लस हो गया एंड यू आर स्टक समवेयर, लीव इट. DSL को करो, इट्स मोर देन इनफ, राइट? CP का तुमने एक्सपीरियंस ले तो लिया है, पूरी लाइफ तो नहीं करोगे, यू गेटिंग द पॉइंट? बट अब सॉल्व जरूर करो, वेन एवर यू आर डूइंग इट, अब सॉल्व करो, है ना? इफ यू आर नॉट अब सॉल्विंग एंड देन यू आर स्टक, देन यू आर रॉन्ग. कूल. तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रोथ मिलेगा, राइट? एंड इफ यू आर स्टक, देन सिंपली थिंक वन थिंग कि काफ़ी टाइम लगता है CP में, राइट? एवरीवन इज डिफरेंट, हर किसी को डिफरेंट टाइम लगेगा, ओके? बाकी एवरीवन से हर हर कोई 11-12 दे के आया है, वी ऑल नो अबाउट द कॉम्पिटिशन, राइट? कि
देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, राइट? सबको अपना अपना जितना भी टाइम लगना होता है लगता ही है, बट व्हाट वी कैन डू आवर बेस्ट इज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, राइट? ओके, सो बस ये कहूँगा कि इफ यू आर स्टक समवेयर, डोंट गेट स्टक, जस्ट कम आउट ऑफ इट, लीव इट, है ना? कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन दिस वेबिनार, और प्रीवियस में भी मैंने यही बताया था कि इट्स नॉट मैंडेटरी थिंग, इट्स लाइक फॉर योर फन, एंड इफ अगर वो तुम्हें उल्टा पड़ रहा है, इफ यू आर गेटिंग डिप्रेस बिकॉज ऑफ इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ओके, आई मीन सेकेंड ईयर, एंड कैन आई स्टार्ट CP and DSA and C++ still parallelly, right? You can do, क्योंकि we have a lot of time in engineering colleges, right? So you can easily do this, ठीक है? कोई इशू नहीं आएगा इसमें। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कहाँ से स्टार्ट करूँ? फॉर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जो मैंने अभी वेबसाइट, अभी मैं कमेंट भी कर दूंगा आफ्टर द वेबिनार एंड्स, उस वेबसाइट पे जाना, उसमें डिव 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, वन बाय वन। डिव 3 आर रियली इजी प्रॉब्लम्स, धीरे 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 यू विल गेट कैच अप, है ना? मतलब ऐसा करो कि फॉर 2 months फोर्स योर सेल्फ, कि 2 महीने तो करना ही है, कुछ हो ना हो, बस कर रहा हूँ मैं। इनफ प्रैक्टिस करो, एंड फ्रॉम द थर्ड मंथ यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। ओके, ऐसे ही एक नोवेल में होता है, व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग अ नोवेल, व्हाट हैपेंस इज हम 50 पेजेस तक वी फोर्स आवरसेल्फ कि यार थोड़ा पढ़ लेता हूँ, मतलब मेरे साथ तो यही होता है, आई फोर्स माई सेल्फ टू रीड 50 पेजेस, एंड देन आई सी कि इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो आई कंप्लीट द नोवेल, और नहीं आ रहा है तो आई लीव इट, राइट? तो इफ यू आर एन बिगनर टू दिस, फोर्स योर सेल्फ फॉर 1-2 months, देखो क्या चीज़ है ना? एंड व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड इट, देन इट्स योर चॉइस। I'm second year. How to start? Okay, if you're in second year and you have internship session in the next semester only, then जैसे अभी semester आना है, and then you will have these internship के लिए companies आने लगेगी and all that. So lead code करो. Lead code will get you anywhere, wherever you want, right? CP इज लेट्स से लीड कोड इज अ सबसेट ऑफ CP, ऐसे मान लो, ठीक है? कि CP कर रहे हो तो ये तो कवर हो ही रहा है, बट लीड कोड छोड़ना नहीं है, लीड कोड करना है, राइट? इट्स नॉट कि यार मैंने काफ़ी CP करी है और मैं लीड कोड के क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देर आर सम रियली गुड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो लीड कोड पर है, एंड लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स गेट स्टक ऑन देम, राइट? क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए वही अप्रोच चलेगी और कोई अप्रोच नहीं चल सकती। गेटिंग द पॉइंट, है ना? इन द एंड व्हाट मैटर्स कि इंटरव्यू में किसने क्वेश्चन कर दिया और किसने नहीं करा, यही तो मैटर करता है इन द एंड, राइट? अब वो DSA लीड कोड से आ रहा है, या वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोड फोर्सेस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, राइट? यू नीड टू डू दैट क्वेश्चन। तो मैं आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू लीड कोड फर्स्ट एंड देन गो फॉर कोड फोर्सेस। ओके, okay, so no offense, but attaching tags like Microsoft, Google, and CP is the main reason why there is so much of cheating happening in contest. समझा नहीं मैं, फिर पढ़ते हैं। No offense, but attaching tags like Microsoft, Google with CP is the main reason why so much cheating is happening in contest. Okay, so basically you are trying to say uh, कि अगर हम CP को टेक इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ जोड़ रहे हैं, that's why people are trying to do CP and cheating हो रही है। Maybe you're trying to say this only, right? ओके, सो आई कांट से मच इनटू इट, बट बात ये है कि जैसे गूगल है, तो इट्स टेकिंग लॉट्स ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू किक स्टार्ट, है ना? तो किक स्टार्ट इज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, वी ऑल नो। तो थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़ जाता है। बात ये व्हाट आई वाज सेइंग इज कि किक स्टार्ट इज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, हैश कोड एंड हैकर कप एंड कोड जैम, सब CP कॉन्टेस्ट हैं, एंड इनसे ही काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं, राइट? सो ये सारे कॉन्टेस्ट दे हेल्प इन रिक्रूटमेंट, तो इसलिए कंपनीज का नाम अपने आप आ जाता है, बिकॉज वो कंपनी के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट हैं, राइट? सो इट्स नॉट कि वी आर एडिंग इट, वी आर ट्राइंग टू एड इट, कुछ ऑलरेडी चल रहा है उसको देख के हम बोल रहे हैं, इट्स लाइक दिस, राइट? ओके, बाकी आई हैव ऑलरेडी सेड कि CP इज नॉट मस्ट, राइट? ओके, इज योर CP कोर्स हेल्पफुल? आई एम प्लानिंग टू इनरोल। अच्छा, सो इसका इसका जवाब मैं कैसे दूं, राइट? मतलब यू कैन आस्क एक्स स्टूडेंट्स ऑफ
कोडिंग ब्लॉक्स की सही है नहीं है कैसा है, राइट? मतलब काफ़ी होंगे तुम्हारे अराउंड जिन्होंने लिया होगा कोर्स, यू कैन आस्क देम, और रेटिंग्स वगैरह चेक कर लो, है ना? वरना शायद फ्री ट्रायल वगैरह भी होता है, एक बार वो देख के ले लो। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। कूल। अच्छा, एक बार बार आ रहा है, हाउ टू टेक जॉब एज मन, MERN स्टैक। ये सन सुना था मैंने। आई डोंट नो अबाउट दिस। सॉरी मांशु। ओके। How to get referrals from LinkedIn? Nice question. Uh, so I have various examples in this. There was one friend of mine. वो रैंडमली मतलब रैंडमली किसी को भी अप्रोच करके अपना CV भेज देता था, right? He used to shorten the Google Drive link for his resume by using some web URL shortener, and क्योंकि LinkedIn में लिमिटेड होती है ना, 300 वर्ड्स की कैपेसिटी होती है, तो वो URL शॉर्टन करता था, एंड ही यूज्ड टू सेंड his resumes to random people, right? And sometimes what happens is वो अगला बंदा इंटरेस्टेड हो जाता है, बिकॉज उसको भी रेफरल लगाने के पैसे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, right? Eventually what happens is, if someone is trying to refer you and you get into the company later, let's say you crack it, and तो क्या होता है, when you join the company, he gets paid, the one who has referred you, मोस्टली होता है, राइट? सो रेफरल लगाने के लिए भी लोग एक्टिवली ढूंढते हैं, इट्स नॉट दैट, बट ये है कि जनरली वेन एवर यू आर ट्राइंग टू अप्रोच समवन ऑन लीड कोड, तो वो तुम्हारी प्रोफाइल भी चेक करता है कि हाउ इज योर प्रोफाइल ऑन लीड कोड, और देखता भी है कि रैंक्स वगैरह कैसी हैं आसपास, राइट? कि विल यू रियली बी एबल टू डू इट और नॉट, राइट? तो वेन एवर यू आर अप्रोचिंग समवन ऑन लिंक्डइन, देन आई वुड से कि पोलाइट तो रहना ही है ना? एंड एक प्रॉपर पैराग्राफ सब बना के रख लो कि जिसमें तुम अपने बारे में ही बता दो कि दिस इज मी, दिस आई हैव डन, आई हैव दीज रैंक्स, एंड दिस इज माई रेज्यूमे, एंड बी पोलाइट, एंड और ऑफ कोर्स रेट ऑफ एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन कि तुमने कितने ज़्यादा लोगों को भेजा है, तो जितने मैक्सिमम लोगों को रीच करोगे उनमें से थोड़े बहुत तो रिप्लाई करेंगे, राइट? दैट्स व्हाट आई हैव सीन। बाकी uh, बस यही है, ठीक है? ओके, put link here. Yeah, I'll just put the link. I'll put the link, okay, after the webinar ends. Okay, I've been working in the service-based company for 2 years. No, it's never late to start competitive programming. कभी भी कर सकते हो. Like, if you have really less time, तो मैं कह रहा हूँ ना, just pick up one website and उस website में just start upsolving. Just give contest and upsolve, nothing else. Eventually, you'll see the difference. What about A2OJ ladder, right? तो मैंने भी A2OJ ladder करी थी at my like second year में, I guess, A, B, C and all. तो they were really very very good questions, and like मैंने वो पढ़ा था एक blog about A2OJ letters, उसमें था कि those letters were kinda machine learning किसी algorithm से वो questions बने थे, right? कि if someone has gone from this rating to this rating, तो उसने previously कितने कितने कैसे कैसे questions करे, so those were the collection of questions there, right? So क्वेश्चंस कहीं से भी करो, अच्छा है, राइट? बट पूरा क्वेश्चन करो और कॉन्टेस्ट मत छोड़ो, कॉन्टेस्ट रेगुलरली देते रहो, दैट विल हेल्प यू मेंटेन, मतलब वो तुम्हें जो होता है ना टाइम मैनेजमेंट, वो उसमें तुम्हें हेल्प करेगा कॉन्टेस्ट, एंड टाइम मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, इवन इन द कोडिंग राउंड्स एंड इवन इन द इंटरव्यूज ऑल्सो, ओके, राइट? सो अमेजन के लिए आई रिसेंटली टॉक टू संजीत बुरा मैम, एंड शी इज वेंट टू अमेजन, शी वाज इन कोडिंग ब्लॉग्स, तो अभी मैंने शाम को बात करी थी, एंड शी सेड कि she wasn't able to come here on the broadcast, but she told me to tell you that कि it's not जरूरी, मतलब it's not mandatory कि you have to be good at CP, right? You just need to solve some standard good problems to crack Amazon. That's what she told me. मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं अमेजन में, डीपी के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, बाइन रिसर्च के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, राइट? इवन किक स्टार्ट में भी टॉप 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही आते हैं, राइट? सो
It's not needed. CP is not really needed. Just do good DSA from LeadCode. या एल्गो प्लस प्लस का कोर्स है सीपी का, बहुत अच्छा कोर्स है. देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट कोर्स, यू कैन ट्राई दैट टू, राइट. सो शी वाज जस्ट सेइंग मी दिस टू टेल यू ऑल कि जितना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जितना लीड को ट्राई करोगे उतना बेटर रहेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो अमेजन जा रहा है उसको वो सीपी में ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, राइट. देयर वाज वन फ्रेंड ऑफ माइन, उसने 3 मंथ्स में ही अमेजन क्रैक करी थी. लाइक ही स्टार्टेड कोडिंग एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स ही गेव द इंटरव्यू एंड देन ही वेंट टू अमेजन, राइट. तो I'll, if you want, I'll take him in the next workshop, just in case, right? तो सीपी उसने बिल्कुल नहीं करी. ही जस्ट फॉलोड माई एडवाइस. मैंने उसे कहा था कि बस लीड कोड करो, जस्ट गिव योर सेल्फ टू लीड कोड, जितना टाइम दे सकते हो दो. एंड ही डिड दैट एंड ही गॉट इनटू अमेजन, राइट. ओके, एक मिनट. Okay, this is I already told. In this September, my placement season is going to start. Should I do Codeforces or LeadCode? LeadCode. अगर अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है तो डोंट जंप टू Codeforces डायरेक्टली. बस कॉन्टेस्ट दो. इट इज जस्ट 2 hours एंड वो भी हर रोज नहीं होता है. इट्स लाइक आफ्टर 2 or 3 days ऑन एन एवरेज. So every 3 day you are giving a contest that is just for your time management skills, nothing else. है ना, वो तुम्हें टाइम प्रेशर सिखा देगा. एंड साइड बाय साइड जितना लीड कोड कर सकते हो करो, जितने प्रॉब्लम्स लीड कोड के कर सकते हो करो. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि आई यूज्ड टू easy questions I don't used to see because मैंने enough DSC करा था, मैं पढ़ाने लग गया था and all that. So medium questions I used to read. तो रीड करने से ही मुझे आइडिया लग जाता था कि ये कैसे होना है, बिकॉज मैंने काफ़ी पढ़ाया था. एंड हार्ड क्वेश्चंस को मैं कोड करता था ऑन लीड कोड. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज सेपरेटली आई यूज्ड टू मेक माय ओन लिस्ट. मैंने थोड़े क्वेश्चंस को एक लिस्ट में बना के रख लिया था कि दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझे फिर से देखने पड़ेंगे. इवन इफ आई हैव डन देम वंस, आई विल हैव टू नीड टू सी देम अगेन आफ्टर 6 months or 1 year. राइट, आई मेड द कलेक्शन ऑफ सम क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस हैं, आई हैव टू सी देम अगेन बिकॉज एक बार में दिमाग में नहीं बैठेंगे. सो यू कैन डू दैट टू. कि थोड़े क्वेश्चंस व्हेन यू आर सीइंग कि दीज आर लाइक अलग ही क्वेश्चंस, देन यू जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड सेव देम. ओके, राइट. सो will div to abc be sufficient for regionals online round? Div to abc, see regionals के लिए क्या होता है कि या हर कॉलेज से टॉप रैंकर्स टाइप जाते हैं. कभी कभी 2 भी चले आते हैं, 3 भी चले आते हैं. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सीट्स, राइट. सो ये तुम्हारे कॉलेज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे कॉलेज में कोडिंग लेवल कितना है, राइट. तो ऐसा भी होता है कि किसी अच्छे कॉलेज के लेट से बहुत, मान लो किसी कॉलेज में कोडिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, जैसे डीटीयू ले लो, राइट. तो उसमें लॉट ऑफ टाइम ये होता है कि सम गुड टीम्स जो कि 4th 5th में आई हो, दे आर नॉट एबल टू गो टू दीज रीजनल कॉन्टेस्ट. सॉरी, आईसीबीसी में नहीं जा पा रहे होते हैं ऑन रीजनल्स, राइट. बट इन द सेम टाइम कि थोड़े कॉलेज कॉन्टेस्ट हैं जहाँ पे कोडिंग कल्चर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, वहाँ पे वी हैव सम नॉर्मल टीम्स विच हैव सम डिसेंट रैंक्स, वो चले जा रहे हैं, राइट. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज. अपने कॉलेज के में लेवल देखो, कोडशेयर पे रैंक लिस्ट, कोड फोर्सेस पे देयर इज दिस कॉलेज टैग, उसमें देखो. मतलब फ्रेंड्स वगैरह से टच रहो और जो कर रहे हैं उनसे बात करो, राइट. आई मतलब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट ये आंसर नहीं हो सकता कि विल इट बी सफिशिएंट और नॉट डिव टू एबीसी, राइट. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज लेवल. सॉल्व डेली, राइट. रोज सॉल्व करो, मतलब प्रैक्टिस में रहो, बट अब सॉल्व जरूर करो, राइट. लीड कोड और जीएफजे इज इनफ. सी लीड कोड पे यू विल गेट अ कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस जो रिसेंटली आस्क होते हैं. एंड यस, वन मोर थिंग, लीड कोड पे एक डिस्कशन फोरम भी है. यू कैन ऑलवेज गो टू दैट ना. उस पर लोग अपने रिसेंटली क्वेश्चंस, ऑन साइट क्वेश्चंस एंड दोज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो यू कैन ट्राई दैट टू. So lead code पे you get enough questions, or and if you are not able to understand, let's say you went through a question, नहीं हुआ solve, and then like after half an hour you are understanding the solution on lead code, let's say नहीं समझ आया, then you are going to the discussion forum on the same problem. कि ये discussion forum में गए, वहाँ पे देख लिया कि अलग अलग तरह से लोग समझाने की कोशिश करते हैं उसमें discussion forum में for the same question, right. And still नहीं आया समझ में, let's say, then you can move on to Geeks for Geeks or anywhere, right, to understand that question,
right? But collection of good questions is, I guess, mostly on LeadCode. GF Geeks for Geeks में there is a lot of knowledge. It's not only DSL based. काफी कुछ है, right? Geeks for Geeks में they're expanding very fast. Okay, right. Benefits of your CP course. I'm planning to enroll. बहुत बार आ गया question. Right. Last time also, I guess this same ID से he was trying to ask me कि what I will join coordination of Google, right? So benefits of your CP course में तो यही है कि there's a lot of knowledge at one place. Firstly, secondly, it's been taught by Pratik Bhaiya. Pratik Bhaiya is उनको बहुत experience है teaching में, right? So he completely understands his students कि किस topic को कैसे किसको समझाना है, right? So like easy, medium topics are explained by Pratik Bhaiya and some medium hard topics are explained by me too. तो उसमें आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि रेटिंग्स वगैरह चेक कर लो, किसी ने लिया है तो उससे पूछ लो. मेरे फ्रॉम माई एंड बेनिफिट ज़रूर है उस कोर्स का, राइट? बिकॉज एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं एंड उसमें काफ़ी नॉलेज है, गुड क्वेश्चंस हैं उसमें एंड काफ़ी कंटेंट उसमें, लाइक 1000 प्लस कंटेंट है उसमें, राइट? सो यू कैन ट्राई दैट. आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस. हाउ मेनी क्वेश्चन टू प्रैक्टिस डेली? Yeah. So as I said, it on an average, जैसे मान लो आज कोई कॉन्टेस्ट होना था, लेट से, तो 8 से 10 तो कॉन्टेस्ट था. सो व्हाट वी कैन डू इज, दिन में वी कैन गिव 2 other वर्चुअल कॉन्टेस्ट, है ना? लेट से हमने 2 कोई कॉन्टेस्ट के वर्चुअल दे दिए एंड जितने 3-4 मेरे से हुए, फिफ्थ वाला मैंने ट्राई करा दोनों कॉन्टेस्ट का, तो उसमें समझने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट? So it's ये क्वेश्चन का आंसर कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस डेली कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रेस्प ऑफ नॉलेज, है ना? कि कितना इजीली तुम उस चीज को ग्रेस्प कर पा रहे हो. तुम अगर कम टाइम में ज्यादा ग्रेस्प कर पा रहे हो तो कम क्वेश्चंस कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस. अगर तुम्हें टाइम ज्यादा लग रहा है देन यू कैन लाइक डू सम मीडियम क्वेश्चंस बट ज्यादा क्वेश्चंस करो, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन यू. I'm in the first year and I need to complete any good courses on data structure algorithms just to contest so that my rank don't drop. Is it right mindset? Jump to contest. Okay, so Dipankar, one more thing. कि before going on to any contest, देखो मैंने ये गलती करी थी. आई यूज टू लाइक मैं सीधा कॉन्टेस्ट में जंप कर गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे सी भी नहीं आती थी, C++ नथिंग, राइट? मैं बस पता नहीं समवन टोल्ड मी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं एंड जब मैंने ट्राई किया तो आई गेव 5-10 कॉन्टेस्ट कॉन्टिन्यूसली, मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था इन एनी ऑफ द कॉन्टेस्ट, राइट? बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता था, राइट? तो थोड़ा मैं डिमोटिवेट होने लगा था क्योंकि रेटिंग नीचे ही जा रही थी एंड आई यूज टू सी कि यार मैंने 1-2 घंटे में क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से एंड पीपल आर इन 2 मिनट्स दे आर सबमिटिंग, राइट? तो उसमें मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा था. बट देन समवन सजेस्टेड मी कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू कॉन्टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज एंड इनफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो विदाउट टाइम प्रेशर, राइट? then only you will be able to handle the time pressure, right? So the right mindset would be कि understand the language, try solving good problems, data structures algorithm problems from LeadCode and D3 contest दे दो जो मैंने अभी तुम्हें एक लिंक शेयर किया है, right? उससे तुम you can easily maintain a track of questions you have done and then go to contest, right? And contest से ना effect मत हो कि यार रेटिंग गिर रही है बढ़ रही है, it doesn't matter in the end, it right? So in the end it doesn't matter कि कितनी रेटिंग बढ़ी घटी. इट व्हाट इट मैटर्स इज कौन गूगल में है, कौन अमेजन में है, कौन माइक्रोसॉफ्ट में, एंड ऑल दैट, राइट? सो गिव कॉन्टेस्ट इफ इट इज फन फॉर यू, डोंट टेक इट एज अ बर्डन थिंग कि इतना तो करना ही है, राइट? That I think that has been answered. Just a second. CSCS problem set. See, I told you कहीं से भी करो, just do good.
कहीं से भी करो, मतलब कोई भी एक साइट पकड़ लो, पूरा सॉल्व करो उसको। डोंट जंप ऑन टू सम अदर वेबसाइट, एक पकड़ो, अच्छे से करो, राइट? ओके, वे टू कॉन्टेक्ट यू, अच्छा यू कैन मेल मी ऑन aparkamal@gmail.com, सिंपल है, APARKAMAL@gmail.com, मेल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलरली चेक मेल्स। ये मेल चेकिंग की आदत पड़ गई है बिकॉज ऑफ रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ऑफ कंपनीज, पता ही नहीं चलता है कब इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, राइट? Nowadays, Codeforces problems are more based on math and constructive, not DSA related. तो recently मैंने छोड़ रखा है, like 3-4 months हो गए मुझे. But what I would say कि अगर contest में you are not getting good problems, अगर just in case कि तुम्हें नहीं लग रहा कि वो problems हैं जो तुम्हारा मन कर रहा है करने का, then what you can do is you can give virtual contest. And इसमें if you Hari Krishnan, right? So इसमें what you can also do is कि दे गो टू कोड फोर्सेस, गो टू प्रॉब्लम सेट, एंड इसमें यहाँ पे टैग्स आते हैं। तो लेट्स से तुम्हें सेगमेंटरी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उस टैग्स में यू जस्ट सेलेक्ट सेगमेंटरी। यू में नंबर थ्री की करनी है, जस्ट सेलेक्ट नंबर थ्री एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट यू गेट। इवन यू कैन सॉर्ट देम और गैप देम बिटवीन द रेटिंग्स, कि इससे इस रेटिंग के बीच की प्रॉब्लम्स बता दो, राइट? तो कॉन्टेस्ट देना तो आई गेस इट्स गुड, इट्स नेवर बैड। How to join CBTA? Okay, so you can go to this link cb.lk/ta, right? /. So cb.lk/ta, उस पे आई गेस यू विल गो टू अ फॉर्म, उस फॉर्म को फिलअप कर दो। सो उससे क्या होगा कि जब भी हमें टीए की ज़रूरत पड़ेगी, विल कॉन्टेक्ट यू थ्रू दैट फॉर्म। ओके, cb.lk/ta. ओके, this has been done. I'm a 3-star coder on CodeChef. How much time will it take to be 5-star? Continuously up solving. 5-star भी मैंने देखा आजकल easily बन जा रहे हैं. It's not a big issue, right? Short contest दो, because एक long question मान लो, if you are trying to think it for 2 days, अगर तुम 2 दिन short contest दोगे तो सोचो, you will get 20 different logics in 2 days. And in long contest, तुम 2 दिन में एक ही logic कर पा रहे हो, and that too you are trying to figure out, right? तो शॉर्ट दो, बेटर रहेगा। वो छोटे छोटे जो तुम्हें लॉजिक्स मिलेंगे, लेट्स से 20 डिफरेंट लॉजिक्स फॉर 22 days, तो फ्रॉम दोज 20 लॉजिक्स ओनली एक लॉन्ग का क्वेश्चन बन रहा होगा, राइट? तो शॉर्ट करो। लॉन्ग इज जस्ट कि यार वो उसमें टाइम प्रेशर नहीं है, एंड दैट्स इट्स एब्सोल्युटली फॉर बिगनर्स। बिगनर्स भी एक दो लॉन्ग दो, ज़्यादा मत दो, राइट? राइट, सो व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ लीड कोड? ओके, सो राइट, सो अ प्रॉपर यूज ऑफ लीड कोड क्या रहेगा? सो इजी क्वेश्चंस को रीड करो, राइट? जस्ट रीड इजी प्रॉब्लम्स, इतने टफ नहीं होते हैं टू कोड, दे इजी टू इम्प्लीमेंट, राइट? उनको रीड करो, यू विल easily be able to figure out the logic and code if you have good experience with it. बट मीडियम और हार्ड प्रॉब्लम्स को कोड भी करो, ओके? सो बस मतलब बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ इजी प्रॉब्लम्स इन विच यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम ऑन कोडिंग। कोड करने में टाइम वेस्ट मत करो उस पर, जस्ट रीड द इजी प्रॉब्लम्स एंड कोड मीडियम एंड हार्ड प्रॉब्लम्स। एंड मोर स्पेसिफिकली लेट्स से इफ यू आर ट्राइंग कि तुम्हारा लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू है थोड़े दिनों में, देन गो टू लीड कोड एंड गो टू टॉप माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चंस। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड, राइट? एंड देयर आर चांसेस कि वो रिपीट हो। एंड सेकेंडली, लीड कोड का एक डिस्कशन फोरम है वेयर रिसेंटली जिनके इंटरव्यूज होते हैं, दे पोस्ट देयर क्वेश्चंस, तो उसको भी यूज़ करो। एंड लीड कोड में देयर आर वीकली कॉन्टेस्ट ऑल्सो। सो आई गेस LeadCode is more than enough to go to any company, any company. Seriously, international offers के लिए भी I guess LeadCode is more than enough. एक भैया थे, and
उनका इंटरनेशनल ऑफर था, उनके क्वेश्चंस भी मुझे लीड कोड पे मिल गए थे व्हेन आई डिस्कस सम क्वेश्चंस विद हिम। आई गॉट द सेम क्वेश्चंस ऑन लीड कोड आल्सो। जस्ट गो, आज जस्ट आफ्टर द वेबिनार गो टू लीड कोड डिस्कशन फोरम, ओके, वंस, एंड ट्राई रीडिंग एक दो डिस्कशंस। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का एक टैब आता है, उस पर क्लिक करना, इट विल सॉर्ट देम आउट अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। उनको एक दो बार रीड करना, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट। ओके, I'm planning for master in DS with AI. Should my time on CP worded? I'm planning for master in DS and algorithm. Okay, AL is for algorithm. Should my time on CP worth it? Yeah, वर्थ इट होगा। अनिकेत, डो नॉट, कभी सोचना ही मत कि अगर सीपी करोगे तो वर्थ इट नहीं होगा, हमेशा होगा, है ना। बट अननेसेसरली करोगे तो शायद गड़बड़ हो, कि बस कॉन्टेस्ट दिया और छोड़ दिया। कॉन्टेस्ट दो, अब सॉल्व करो, डिस्कशन करो फ्रेंड्स के साथ आफ्टर द कॉन्टेस्ट एंड्स, कि ये कैसे किया, ये अप्रोच कैसी थी। कोड्स पढ़ो, टॉप टॉप रैंकर्स के कोड्स पढ़ो, दे राइट शॉर्ट एंड प्रिसाइज कोड्स एकदम, टू सेव टाइम, टू सेव एनर्जी, राइट। सो यही है, राइट। ओके, सो कोड फोर्सेस का डिव टू सी कॉन्सिस्टेंटली नहीं हो रहा है, कभी कभी बी भी नहीं हो रहा है। ओके, सो वही है, बी और सी वाली लेटर ट्राई करो, है ना। जितने बी और सी प्रॉब्लम्स जो मैंने तुम्हें एक वेबसाइट दिखाई थी रिसेंटली अभी इसी वेबिनार में, उससे बी और सी प्रॉब्लम्स सारे, डिव थ्री के बी और सी प्रॉब्लम्स ट्राई कर लो, उसके बाद एजुकेशनल के सारे बी और सी प्रॉब्लम्स ट्राई कर लो वन बाय वन डेली, राइट। क्योंकि उस वेबसाइट से यू कैन मेंटेन द ट्रैक कि तुमने कितना किया और कितना करना है। If you're doing CP, do we need to do web dev and machine learning? It depends on your choice, ठीक है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बिकॉज ग्रेजुएट लेवल एंट्री के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज आस्क डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड अ छोटा मोटा प्रोजेक्ट डिस्कशन राउंड। प्रोजेक्ट में कुछ भी बना सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरली कि ML AI के हों, डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट हो सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, राइट। तो मन पर है तुम्हारे, है ना। बट ग्रेजुएट के लिए जनरली DSL को ही चाहिए होता है, और एक दो छोटे प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, ओके, so I think I should be ending it over here, and time is up. Next workshop में मिल सकते हैं guys. Okay, so we'll keep a different topic for the next workshop, and uh, ठीक है, because दो वर्कशॉप लगातार हो गई ऑन द सेम टॉपिक, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट। सो इन द फाइनली मैं बस यही कहूँगा टू समराइज इट ऑल कि CP इज नॉट मस्ट, CP ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जो भी जा रहा है, जो भी उस कंपनी में काम कर रहा है, ही डिड CP अ लॉन्ग बैक, का कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ऐसा ज़रूर है कि जिसने अच्छी CP करी है, वो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन CP, दे आर इन गुड कंपनीज, ये मैंने नोटिस किया है, राइट। तो CP would never be a waste of time if you try it, okay. But if you are just planning for interview preparations on short, in short, then go for lead code, right, and साथ में give contest wherever you can, okay. Okay,